A very good evening to all present. I, on behalf of the Honorable Supreme Court of India, take this privilege to warmly welcome all our esteemed guests to the groundbreaking ceremony of the expansion building of the Supreme Court of India. We are extremely honored to have amidst us Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud, Honorable the Chief Justice of India, Shri Manohar Lal, Honorable Minister of Housing and Urban Affairs, Honorable Shri Justice Sanjiv Khanna, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, Judge, Supreme Court of India, and Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State for Law and Justice. We are also honored to have with us other Honorable Judges of the Supreme Court of India, Shri R. Venkat Ramani, Learned Attorney General for India, Shri Tushar Mehta, Learned Solicitor General of India, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India, Shri Kapil Sibal, President, Supreme Court Bar Association, and Shri Vipin Nair, President, Supreme Court Advocates on Record Association. On behalf of the Supreme Court and its dedicated fraternity, I extend a warm and heartfelt welcome to all other esteemed guests who have honored us with their presence here today. Today, we come together to mark the beginning of a new chapter in the history of an institution that has played a pivotal role in shaping the destiny of our nation, the temple of justice, the protector of rights, and the embodiment of constitutional values. It is rightly said that institutions are not built, they are grown. With each expansion, we nurture the seeds of progress. With every brick laid, a dream takes shape. An institution's infrastructural expansion builds the foundation of a better tomorrow, as it is through such an expansion that vision meets reality and progress meets purpose. Today's groundbreaking ceremony marks the dawn of a new era as we lay the foundation for a modern and sustainable infrastructure that will enable this great institution to continue its commitment to justice for generations to come. On this note, I humbly request Honorable Shri Justice Sanjiv Khanna to kindly deliver the welcome address. Dr. Justice CJI Chandrachud, the Chief Justice of India, Shri Manohar Lal, Minister of Housing and Urban Affairs, sitting and retired sister and brother judges of the Supreme Court of India, Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Law and Justice, Mr. R. Venkat Ramani, the Attorney General of India, Mr. Tushar Mehta, Solicitor General of India, Mrs. Manan Kumar Mishra, the Chairman, Bar Council of India, Mr. Kapil Sibal, President, Supreme Court Bar Association, Mr. Vipin Nair, Supreme Court Advocates on Record Association, members of the Bar, senior advocates, distinguished guests, Namaste and a good evening. This is a happy and a momentous occasion as we break the ground and take steps for expansion and construction of a new building, including courtrooms, within the Supreme Court complex. The event signifies much more than unveiling of bricks and mortar. It's a manifestation of our collective vision for a stronger, more accessible, and efficient justice system for the citizens of India. On 28th January 1950, just 2 days after India proudly became a republic, the Supreme Court of India came into being. It was a beacon of hope for justice for a newly independent nation, determined to chart its own course, wedded to the principles of equality, liberty, and fraternity. It took 4 years for the inauguration of the Supreme Court building by our respected first president, Dr. Rajendra Prasad. In his words, the court had finally acquired a habitat of its own. It has found a permanent abode, not just in the legal fraternity, but for the aspirations of millions of Indians who look to the law as a protector of their rights and freedoms.
The majestic sandstone building, with its towering columns and stately presence, stood as a manifestation of the vision of India's people. After 2 centuries of colonial rule, marked by oppression, tyranny, and injustice, the common people of India finally had their hands on the ark of a free nation. With the courage, conviction, and hope, began to bend it towards justice. They believe in the idea of judiciary that would stand as an independent, impartial, and resolute guardian of the Constitution and the fundamental rights it enshrined. Though court complex, the balance in its very design, the statues of Gandhiji and Dr. Ambedkar reflect the soul of our republic and judiciary. As we stand here today, let us not only admire the beauty of the structure, but also reflect on the immense responsibility it carries. It is in these chambers that decisions have been taken and will be taken that shape the destiny of this country. It is here that justice will be sought by generations to come. It is here that the promise of a constitution will be kept alive. Today and in future, it is about creating an ecosystem where justice can be delivered swiftly, fairly, without bias, and without high costs. We would like to express our deepest gratitude and welcome those who have and will make these new courtrooms possible. The architects, the engineers, the planners, and the court officials who will work tirelessly to bring this project to its fruition. Their work will stand for the generations and beacon of justice and progress. May this path we chart today be one of progress, equity, and enduring justice for all. Thank you. Thank you, sir, for your insightful and inspiring address on this momentous occasion. अब मैं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ कि वो इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण को संबोधित करें। Groundbreaking ceremony of the expansion building of the Supreme Court of India. आज का फंक्शन और फंक्शन के लिए सजा हुआ मंच न्यायिक व्यवस्था के सिरमौर व संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष की गौरवमय यात्रा पूर्ण होने पर एक्सपेंशन बिल्डिंग की जो ये आज भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हुआ है उसके लिए मंच पर उपस्थित न्यायिक पालिका में नवाचारों को अपनाकर न्यायिक सुगमता सुनिश्चित करने हेतु संकल्पित डायनेमिक विजनरी भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर CJI चंद्रचूड़ जी, माननीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई साहब, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री R वेंकटरमणी जी, हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया श्री मनन कुमार मिश्रा जी, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के माननीय कपिल सिब्बल साहब और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के हमारे श्री विपिन नायर जी तथा उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य सभी न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मीडिया बंधु तथा वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में प्रतिष्ठित भारत में गवर्नेंस के प्रमुख ऑर्गन के रूप में न्यायपालिका तथा न्याय के सर्वोच्च मंदिर की 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। आज इसी श्रृंखला में
एक्सपेंशन बिल्डिंग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आप सभी के साथ शामिल होना अत्यंत हर्ष का विषय है। आज इस भूमि पूजन के अवसर पर हमने प्रकृति के 5 तत्वों यथा पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि व जल आदि की वंदना की है। अभी आप कहेंगे कि भाई 500 तो हमने नहीं देखे, तो मैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सभी जजों को सम्मिलित किया और मातृशक्ति को भी सम्मिलित किया। अब उसको अंग्रेजी में बेटर आपका, मातृशक्ति को भी सम्मिलित किया, और जितने भी और जज थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज के लोग हैं और जो हमारे एडवोकेट्स हैं सीनियर, और जो उस परिसर में उपस्थित से सबको सम्मिलित किया भूमि पूजन के लिए। इसके लिए तो सीजीआई साहब को आप बहुत ताली बजा के धन्यवाद करना चाहिए। अब इसमें भूमि तो थी, और नारियल जब फोड़ा था तो खट्टर साहब ने तो बहुत तेजी से फोड़ लिया था, तो लेकिन पानी निकला था, तो उसको हम जल कहते हैं। पृथ्वी होगी, जल होगी, आकाश ऊपर साक्षी दे रहा था, हमें देख रहा था कि ये आज सुप्रीम कोर्ट में नई बिल्डिंग की जो शुरुआत हो रही है, कौन कौन लोग खड़े हैं। और उसमें दीपक जल रहा था, साइड में देखा मैंने, वो अग्नि के रूप में था। वायु आ रही थी, टेंट की व्यवस्था थी, फिर भी वायु आ रही थी। तो हमने पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन सब की वंदना की है। प्रकृति में भी 5 तत्व हैं जिससे प्रकृति बनी है, हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है। हम सब मिलकर के हम प्रकृति के साथ एकाकार हुए। ये एक्सपेंशन बिल्डिंग तो बहुत ही शानदार काम करने वाली होगी आने वाले समय में, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक मंत्र दिया। 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, इसके लिए भी काम करना है। तो हमारा एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट, उसके भी एक्सपेंशन की जरूरत थी, नया भवन बना। हमारा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जिसमें सभी मंत्रालयों में हम ईज ऑफ वर्किंग, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है, और खट्टर साहब ही इसको देख रहे हैं। और आज जुडिशरी की सर्वोच्च संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में एक्सपेंशन बिल्डिंग की ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जुडिशरी के पास भी, एग्जीक्यूटिव के पास भी और लेजिस्लेटिव के पास ही, उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। और खट्टर साहब आगे, इसलिए कोई कमी भी अब रहने वाली नहीं है। 1950 में 8 जजों की वर्किंग स्ट्रेंथ से शुरू होकर आज सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग स्ट्रेंथ 34 जजों तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा में टाइम टू टाइम परिवर्तन भी हुए हैं। वर्ष 1979 तथा 1994 में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए वर्ष 2005 में म्यूजियम बिल्डिंग का निर्माण, ये कुछ एक्सटेंशन के इसमें वर्ष काम हुए। इसके पश्चात 2015 में मेन ब्लॉक व म्यूजियम बिल्डिंग के मध्य एनेक्स बिल्डिंग का निर्माण किया गया। ये सब काम बीच बीच में होते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंशन बिल्डिंग के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 795.53 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आगामी 5 वर्षों में प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को ध्यान में रखकर सर्व समावेशी कोर्ट रूम बनाने तथा बार, बेंच, लिटिगेंट व अन्य स्टेक होल्डर को स्टेट ऑफ आर्ट यूटिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रोजेक्ट आम जन को न्यायिक सुलभता के परिप्रेक्ष्य में ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए न्यायपालिका में ईज ऑफ वर्किंग को बढ़ाने का एक माध्यम होगा। सामान्य मानवी के लिए न्याय हेतु फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की भूमिका निभाने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते हुए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत कोर्ट हॉल, रेजिडेंशियल यूनिट, लॉयर्स हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स इत्यादि के निर्माण के लिए 2014 से लेकर अब तक
7,872 करोड़ रुपए की राशि डिसबर्स की जा चुकी है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 में कोर्ट हॉल की संख्या 15,818 से बढ़कर अब 22,901 तथा जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए रेजिडेंशियल यूनिट की संख्या 10,211 से बढ़कर 15,934 तक पहुंच चुकी है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि नागरिक पहले, सम्मान पहले, न्याय पहले की भावना को ध्यान में रखकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सर्वसुलभ न्याय की अवधारणा को साकार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के इस फिजिकल एक्सटेंशन से परिसर में आगे चलकर आने वाले या काम करने वाले स्टेक होल्डर्स को आसानी होगी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने वाले नागरिक के पास कोर्ट को जाने में यानी डोर स्टॉप जस्टिस की डिलीवरी करने में भी आसानी हुई है। इसी दिशा में ऑनलाइन, डिजिटल, पेपरलेस व स्मार्ट कोर्ट बनाने हेतु 7,210 करोड़ रुपए की लागत से ई कोर्ट फेज 3 का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है और जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल जो बना है ये भी अपना आप में एक नवाचार है। न्याय की पहुंच को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के लिए बॉटम अप व सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ टेली लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज जैसी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। टेली लॉ के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक बेनिफिशरीज को प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जा चुकी है। ये माइलस्टोन है, अभी अभी हुआ है। टेली लॉ के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक बेनिफिशरीज को प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जा चुकी है। स्थानीय भाषाओं में लीगल लिटरेसी व लीगल अवेयरनेस को बढ़ावा देने हेतु AI बेस्ड भाषिणी टूल के उपयोग से न्याय सेतु जैसे इनोवेशन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विकसित भारत के विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इसी कड़ी में आज का ये ऐतिहासिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया जाना बेहद अहम पड़ाव है। मैं इस अवसर पर पुनः सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर जस्टिस CJI चंद्रचूड़ जी व उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में बनने वाली सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग न्यायिक सुगमता के क्षेत्र में उच्च कोटि के प्रतिमान स्थापित करने का प्रभावशाली माध्यम बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके भाषण ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के महत्व को रेखांकित किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे यह विस्तार भवन न्याय की पहुंच और सुलभता में सुधार लाएगा। अब मैं आदरणीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विस्तार भवन के शिलान्यास के समारोह के अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी को संबोधित करें। सर्वोच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी, हमारे केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हमारे न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस BR गोवई जी, उपस्थित सभी हमारे अन्य महानुभाव, सभी अन्य न्यायाधीश बंधुगण, सभी हमारे कोर्ट के सीनियर लॉयर्स, उपस्थित अन्य सभी अतिथि भाइयों बहनों, आज का ये अवसर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक नया मील का पत्थर और बना है। जैसा हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 यानी संविधान के लागू होने के ठीक 2 दिन के बाद इस देश में हो गई थी और उस समय जो संविधान न्याय अपना सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियां जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था उससे शुरू हुई थी, जहां अंग्रेज़ का जो न्याय की प्रक्रिया वर्षों से चलती थी। शायद 1958 में वर्तमान ये जो अपना भवन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये बना। 3 बार पहले इसमें एक्सटेंशन हो चुकी हैं और ये चौथी एक्सटेंशन अब जिसका आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग यानी भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है, ये अपने आप में विस्तार से जो अपनी इस
संस्था में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी हमारी बाधाएं हैं, उनको निश्चित रूप से दूर करेगी। इस अवसर पर आपको सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यतो धर्म ततो जया, हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये बोध वाक्य है कि जहाँ धर्म या सत्य है वहीं विजय होती है। तो सत्य के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और जैसा हम जानते हैं कि अपने संविधान ने जो लोकतंत्र के 3 भाग हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, देश को एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए जिसमें समाज जीवन में हर नागरिक को न्याय मिले, हर नागरिक को अपने जीवन जीने की सुविधाएं व्यवस्था के अंतर्गत मिलें, उसके लिए हमारी विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी। और कहीं कोई कठिनाई कमी रह जाती है तो उसको हम लोग न्यायपालिका के नाते से नीचे से ऊपर तक व्यवस्था बनी उसको ठीक करते हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि आखिर तीनों ही अंग समाज जीवन को किस प्रकार से व्यवस्थित चलाया जाए, कैसे लोगों के सुख की कामना करते हुए उनको व्यवस्थित किया जाए, हेतु सबका यही है। चाहे कानून बनाने की बात हो, उसको लागू करने की बात हो, या कोई किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, उसको न्याय मिले। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, अन्याय न हो ये तो ठीक है, लेकिन किसी के दूसरे व्यक्ति पर अन्याय करने की हिम्मत भी न हो, ये भी एक पहलू हम सब ध्यान करते हैं। और उसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे इन तीनों अंगों की, यानी इनकी समन्वय, इनका कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे तालमेल, क्योंकि जब लक्ष्य एक है, हेतु एक है, तो उस नाते से इस ओर बहुत कुछ किया जाता है। क्योंकि मैं भी हरियाणा का 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हूँ, तो हमारी मुख्यमंत्री और जो हाई कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश, उनकी सबकी कॉन्फ्रेंस होती थी आदरणीय चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में, शायद हर वर्ष होती है। उसमें बहुत से विषय आते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, फिर भी इसको और ज़रा अच्छा स्मूथ करने की आवश्यकता है। कभी कभी हमको ये ध्यान में आता है कि आपस में टकराव ये होता है कि ये काम तो हमको करना था, ये काम में वो दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं, कहीं जुडिशरी की ओर से, कहीं न्यायपालिका या अपने कार्यपालिका की ओर से, कहीं विधायिका की ओर से, ये काम तो हमको करना था, वहाँ से क्यों आ रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कभी कभी ये बात सोचता हूँ तो मुझे एक बहुत पहले एक उदाहरण सुना था। अब उदाहरण तो उदाहरण के लिए है, कई बार उसमें से कुछ विषय निकलता है तो उसमें समझने की बात है। गांव का एक उदाहरण आता है मेरे सामने। एक किसान, उसकी पत्नी, दोनों खेत में भी काम करते थे, और उस दिन उनकी पत्नी खेत में काम करने गई थी। जो किसान था बुजुर्ग, अपना घर में बैठा था चारपाई पर। पड़ोस से एक पति पत्नी आए, वो भी किसान थे। तो किसान जो पड़ोस वाला था, उसने कहा कि चौधरी साहब, आप एक दिन के लिए मुझे अपना बैल दे दीजिए, हमारे बैल को थोड़ा तकलीफ है, कल दोनों बैल को ले जा करके और मैं अपने खेत में हल चलाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन मेरा बैल ले जाइए। तो साथ जो उनकी पत्नी आई थी, वो कहने लगी कि आज हमारी गाय ने दूध नहीं दिया, लस्सी नहीं है, ज़रा घर में लस्सी हो तो हमारे मेहमान आए हैं, उनके लिए एक गिलास लस्सी का दे दीजिए। तो चौधरी साहब ने मना कर दिया कि नहीं, आज हमारे यहाँ भी लस्सी नहीं है। बैल दे दिया, लस्सी के लिए मना कर दिया, और वो घर चले गए वापस। संयोग ऐसा कि वो जो पड़ोसन जिसको मना किया गया था कि लस्सी नहीं है, वो पड़ोसन ज़रा आगे बढ़ रही थी, और रास्ते में उसकी पत्नी, जो मूल किसान पहले वाला था, उसकी पत्नी मिल गई खेत से आते हुए। क्या बहन कहाँ जा रही? कि मैं गई तो थी आपके घर और चौधरी साहब से लस्सी मांगी थी, उसने मना कर दिया। लस्सी मना कर दी? क्यों कर दिया? अब उन्होंने कहा, जो मना कर दिया मैं क्या करूं, आपके घर का मामला है। अच्छा मैं देखती हूँ। वो आगे और दूसरी बहन जो पीछे के शायद लस्सी होगी, ये दे देगी जाके। आई और आकर के अपने पति से पूछा कि पड़ोसन को लस्सी मना की है? क्या लस्सी मना की है? लस्सी तो थी नहीं, इसलिए मना ही करना था। लेकिन लस्सी का मना करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये अधिकार तो मेरा था मना करने का। आपने बैल देने का काम आपका है, आपने दे दिया। लस्सी का काम तो मेरा है, मना करूंगी तो मैं करूंगी, आपने कैसे मना कर दिया?
तो है बड़ा एक लाइटर वेन में एक बात, लेकिन कभी कभी ये टकराट हो जाती है। तो इस टकराट को भी कभी कभी आपस में समन्वय बैठा करके हम करना चाहिए। हमें कार्यपालिका के लोगों को, न्यायाधीश यानी न्यायपालिका के लोगों को और जुडिशरी के लोगों को भी, अगर कहीं कमी है, एक आध कुछ करना है, तो साथ मिलके सुझाव दे सकते हैं एक दूसरे के काम को कि इसको आप आगे बढ़ाइए। मैं एक बहुत कंक्रीट उदाहरण देता हूँ हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा से आया हूँ तो कुछ अनुभव उस समय के हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। एक एक्ट है हरियाणा पंजाब का, PLPA एक्ट, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 में बना था, 124 साल पहले। किन परिस्थितियों में बना होगा, अंग्रेज सरकार ने बनाया, बन गया, चल गया, लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी किसी ने चिंता नहीं की और चल रहा है। जो उसके प्रावधान हैं वो हमारे यहाँ वन विभाग उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपनी मनमर्जी से जो करना कर दिया। कहीं चैलेंज हो गया, छोटी मोटी बात फैसला लोकल लेवल पर हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लोग फैसला करते थे और चलता रहा। और अंतोगत्वा वो पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो कांत एन्क्लेव है ना, इस कांत एन्क्लेव के जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं इनको गिरा दो, क्योंकि PLPA एरिया में आता है। और उसकी कॉस्ट सरकार को कह दी, सरकार इसकी कॉस्ट भरे। सरकार ने कॉस्ट भर दी और वो बिल्डिंग्स कई थी वो गिरा दी गई। और उसका जो संयोग ऐसा कि उस बिल्डिंग्स में 2 बिल्डिंग्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गिर गई। विषय आगे बढ़ा, हमने कहा ढूंढो PLPA एक्ट में कौन कौन सी है, कल को सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इनको सबको गिराओ। ढूंढा क्या, ढूंढा के फरीदाबाद के 4 सेक्टर्स जो सरकारी योजना से प्लानिंग करके, डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ला करके HSVP ने 4 सेक्टर बनाए, वो जमीन PLPA में आती है। और आगे बढ़े, इंटरनेशनल लेवल का एक हमारा फेम प्राप्त हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कई एकड़ में बना हुआ है, गुरुग्राम में ही है। पता लगा वो जमीन भी PLPA में है। कल को अगर इसको गिराना पड़ गया तो क्या होगा, इंटरनेशनली विल बी ब्लेम्ड कि आखिर ये आपने क्यों ऐसा किया पहले। और आगे बढ़े, CRPF का हमारा एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट गुड़गांव में, वो पूरा एरिया वो PLPA में है। और आगे बढ़े तो जितना एरिया PLPA में नोटिफाई हुआ है उसमें 20% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वो PLPA में है। हमारी जितनी रोड्स हैं, नहरें हैं, इतना है, क्योंकि वो एक्ट इस टाइप का था कि इरोजन को रोकना है, तो इरोजन को रोकना तो एक्ट बनाओ कि यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय पेड़ लगाने के। अब पेड़ जितने लग गए, खेती है वो भी, आखिर बांध है तो भी इरोजन तो रोक ही रही है, सड़क है तो भी इरोजन तो रोक ही रही है। लेकिन क्योंकि उसमें लिखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब ये ऐसा चीज़ फंसी, हमने उठा के उस एक्ट में अमेंडमेंट की। वो अमेंडमेंट की तो वो भी अभी पेंडिंग है। कुल मिलाकर के इतना बड़ा ये विषय है, मैं कभी कभी सोचता था कि इस विषय को अच्छा होता मैं अकेले करता, मुझे लगा अकेले नहीं, एक ऐसा विषय है जिसको मैं सबके सामने रखूंगा तो शायद सोचा जाएगा, मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचेंगे, आपकी। ऐसे बहुत विषय हैं जिनको हमको बहुत आपस में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर अबाइड बाय आवर लॉज, वी आर अबाइड बाय आवर एक्ट्स, वी आर अबाइड बाय आवर पॉलिसीज। लेकिन आखिर ये पॉलिसीज, ये कानून, ये संविधान, ये किसके लिए? हमारे लिए बना है। These are for us, we are not for them। हमने ही संविधान के कितनी बार अमेंडमेंट किए हैं, कितने नए कानून बनाए हैं, कितनी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को मिल करके हमको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम देश और दुनिया में कैसे अपनी गति को आगे बढ़ा सकें। तो मैं भले ही विषय से थोड़ा हट गया, लेकिन मेरे मन में था कि मैंने कहा एक विषय मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे काम भारत सरकार के साथ मिल करके आप लोग जो कर रहे हैं, खास करके अभी जो हमारी न्याय प्रणाली में भारत सरकार की भूमिका जो आप लोगों से सलाह किए बिना तो हुई नहीं होगी, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे ये अभूतपूर्व सुधार किए हैं। देश में कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए हुए हैं। मैं वास्तव में सबके योगदान की बहुत बड़ी सराहना करता हूं, क्योंकि ये बहुत औपनिवेशिक अतीत के ये बने हुए कानून, अंग्रेज के टाइम के कानून, और उसमें जितना जनता को इस समय लाभ मिलने वाला है, एक अभूतपूर्व निर्णय जो आपने कानूनी और ये पुलिसिंग और जांच के माध्यम से किया है, इसके लिए मैं सराहना करता हूं। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चंद्रचूड़ साहब, इनका सबसे पहले मैंने इनको हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें जो इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर समय विषय रखा, टेक्नोलॉजी के कारण से बहुत सी चीज़ें उलझी हुई थी, वहाँ सुझाव आए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू कराने वाले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी थे। और उन्होंने अब आकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, सारी न्याय प्रणाली में जितने इन्होंने काम किए हैं सब चीज़ों को ऑनलाइन किया है। और इसमें ई ऑफिस, गवाही, आदेश, फैसले, इनकी रिकॉर्डिंग, हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली, इसमें कानूनी फैसलों का उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से उसको उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद, उसके जो फैसले हैं उसका अनुवाद, और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड NJDG, इसको भी भारत भर में जो अदालतों में लंबित निपटारे के जो मामले हैं उनको जो ऑनलाइन किया है, इस सब सुधार के नाते से जो आपने काम किए हैं बहुत सराहनीय काम है, तो मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा इसमें करता हूँ। आज के इस बिल्डिंग विस्तार से हमारे क्योंकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे न्यायाधीश हैं, हमारे वकील बंधु हैं, हमारे यानी जो जिसको कहना चाहिए हमारे जो लोग जो न्याय लेने के लिए हमारे पास आते हैं, ऐसे सब लोगों को इसका लाभ होगा। इस सब बिल्डिंग के अंदर जितनी सुविधाएं हैं वो सब आप लोगों ने सजाई हैं। CPWD के माध्यम से जो काम करने की एक जो हमारी अपनी अच्छी गति है CPWD की, तो CPWD ठीक समय पर इसको पूरा करे। और फिर भी किसी प्रकार की कोई सहायता आप लोगों को लगता है कि हमारी ओर से आपको चाहिए, हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए हम तो अपने सिस्टम से प्रयत्न करेंगे ही, लेकिन कोई ऐसी बाधा आ जाए जो शायद किसी नियम के कारण से हो, तो उसका निर्णय देने का अधिकार आपका है। एक लाइन में निर्णय देकर उसको खत्म कर देना, हम वो सारी सुविधाएं आपको देंगे। क्योंकि मैं बताता हूं, एक पेड़ बीच में आ गया, सड़क के बीच में। मैं एक बार जा रहा था हिमाचल, तो बिल्कुल गाड़ी मेरी टकराते टकराते बची। सामने रात का समय था, सामने एक पेड़ पर थोड़ा उन्होंने लगाया था वो इल्यूमिनेशन वगैरह, लेकिन एकदम ब्रेक लगाई ड्राइवर ने। मैंने कहा क्या हुआ? कि पेड़ बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में, इधर भी से गाड़ी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो मैंने कहा क्यों नहीं काटते हैं? कि कोर्ट नहीं काटने दे रहा। तो इन विषयों पर थोड़ा विचार करना चाहिए। कभी कोई आज प्रोग्रेस करते हुए हमारी जो डेवलपमेंट के विषयों में इस प्रकार की बाधाओं को, उसका नियम कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी पेड़ काटना वास्तव में अच्छा नहीं है हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए भी, लेकिन क्या एक पेड़ को काटने के लिए उसके ऊपर बंधन लगाई भी 5 पेड़ लगाओ और 10 पेड़ लगाओ, और इसकी 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। अगर 10 वर्ष तक या 10 पेड़ की 3 वर्ष तक सुरक्षा नहीं करोगे, पौधा जब तक पेड़ नहीं बन जाता तब तक उसको लायबल रखो, ताकि एक पेड़ के बदले 5 हो जाए, लेकिन पेड़ कट तो जल्दी जाए। क्योंकि हमारे लिए वनस्पति है, इसको हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना, लेकिन प्रोग्रेस में, हमारे डेवलपमेंट में ये कहीं बाधा न बने, तो इसको भी ज़रूर हमको ध्यान करना चाहिए। मैं इस अवसर पर आपके ये जो हमारा विस्तार का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का है, इसके अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपकी उपस्थिति और शब्दों ने इस ऐतिहासिक अवसर को और भी यादगार बनाया है। May I now request Honorable Justice CJI Chandrachud to kindly unveil the ceremonial plaque to commemorate this historic day. I also request the other dignitaries on the dais to kindly join in.
May I now request Honorable Justice CJI Chandrachud to kindly present Supreme Court's commemorative coin to Shri Manohar Lal, Honorable Minister for Housing and Urban Affairs. May I now request Honorable Justice CJI Chandrachud to kindly present the commemorative coin to Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State for Law and Justice. May I now request Honorable Justice CJI Chandrachud to kindly present the commemorative coins to Honorable former judges of the Supreme Court of India. May I now request Honorable the Chief Justice of India to address this august gathering. Namaskar and very good evening. Brother Justice Sanjiv Khanna and Brother Justice Bhushan Gavai, all my esteemed brother and sister judges of the Supreme Court of India, Honorable Shri Manohar Lal, Minister of Housing and Urban Development, Honorable Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Law and Justice, Shri R. Venkatramani, Learned Attorney General for India, Shri Tushar Mehta, Learned Solicitor General, all the law officers present here, Shri Kapil Sibal, President of the Supreme Court Bar Association, Shri Manan Kumar Mishra, President of the Bar Council Chairperson of the Bar Council of India, Shri Vipin Nair, President of the Supreme Court Advocates on Record Association, all the senior and other members of the bar, and everyone present here. I'm truly privileged to stand before you today for the groundbreaking ceremony for the expansion of the Supreme Court of India. This event is not only a symbol of growth, but also a testament to the evolving journey of justice in our country. The Supreme Court building, as many of you know, is inspired by the scales of justice, with the central wing symbolizing the beam, the two wings representing the balance, and the semicircular hooks at the ends representing the pans of the scale. This vision behind the architectural marvel that our existing building is has stood the test of time. The evolution of this structure mirrors the evolution of our society from a post-independence nation to a global leader in upholding the rule of law. Today we lay the cornerstone for the future of our justice system, a future that promises progress, accessibility, and modernity. As the nation evolves, so do the challenges that our legal system faces. The expansion of the court is designed to accommodate the increasing caseloads, new judicial benches, and the requirements of our judges, lawyers, and citizens. The expansion is not just about increasing physical space. It is about building capacity for justice. While the original structure will remain intact,
The subsequent additions to the complex will make way for the new state-of-the-art facilities. The new structure, spread over 86,500 square meters of built-up area, will be constructed in 2 phases. Phase 1, which is being initiated today, will be completed within 29 months. It will cover approximately 38,250 square meters and consist of 2 basements and a 5-storied building. The ground floor will be dedicated to lawyers' utility spaces, including a library, a canteen with a large seating space for members of the bar, and offices for the Supreme Court Bar Association and the Supreme Court Advocates on Record Association. The upper floors will accommodate courtrooms, court offices, and the chambers. By the time we complete Phase 2, which will span an additional 48,250 square meters over 3 and 4-story blocks, the Supreme Court will have gained an additional 29 courtrooms, new judges' chambers, and dedicated spaces for lawyers and our own registry staff. Notably, the Constitutional Court, with its 17-judge bench seating, will be placed on the 5th floor of the new structure. These additions reflect the commitment of our judiciary to remain dynamic, relevant, and responsive to the increased complexity of cases that we face today. We are not just adding space. We are expanding our capabilities to deliver justice in a timely and dignified manner. These buildings will be environmentally conscious, achieving the GRIHA and B 5-star rating. GRIHA stands for Green Rating for Integrated Habitat Assessment, and of course, the B5 rating is of the Bureau of Energy Efficiency. We have deployed sustainable site planning and aim to achieve energy efficiency and renewable energy integration, waste and water management, control of indoor quality and comfort. The expanded space shall source local and sustainable materials, increase green landscape, and achieve efficiency of light, electricity, and transport. It is pivotal that the apex structure of our justice system embodies the spirit of sustainability and ecocentrism in our structures. The expansion building of the Supreme Court will be fully accessible, incorporating features that are friendly to individuals with physical disabilities. The building allows universal design principles to ensure accessibility. It will have automatic doors, ramps, lifts, adequate signage for navigation, and clearly defined routes for emergency evacuations. Persons with disabilities will find adjustable furniture, designated seating areas in the courtrooms and public spaces, as well as accessible restrooms and parking facilities. With this expansion, we are not just adding rooms or court spaces. We are creating an environment that upholds the dignity of the people who visit the court and manifests the hallowed grounds that have upheld and advanced the intricately woven threads of justice in the tapestry of our constitutional spirit. We are cultivating a culture of upholding the law and enhancing the efficiency of the judiciary. The facilities will be equipped with state-of-the-art technology and infrastructure, allowing for seamless case management, accessibility, and the incorporation of modern tools to support the work of the court. With an increased capacity to host more lawyers, judges, and staff, we are also creating a space that fosters collaboration and learning, key aspects of any thriving judicial system. In preparing the design, I must compliment the Building Committee of the Supreme Court of India, consisting of my own distinguished colleagues, who have actively collaborated with all stakeholders, including the members of the bar. We received some excellent suggestions from the committees, the executive committees of the bar, both present and past, which have enabled us to improve the design elements. As we move forward with this expansion, we are not just adding brick and mortar to an existing structure. We are contributing to the lasting legacy of the Supreme Court of India. This building will stand as a testament to our commitment to justice, fairness, and progress. This expansion, much like our Constitution itself, is designed to serve as a living, breathing entity, adapting to the needs of our society while holding firm to its core values of justice, liberty, and equality.
Today's event signifies not just the physical growth of our institution, but also the broader mandate of ensuring that justice is accessible, efficient, and ever responsive to the needs of the nation. I thank everyone who has played a part in bringing this project to this stage. The expansion of the Supreme Court is more than just a construction project. It is a reflection of our collective commitment to the ideals of justice and the rule of law. I look forward to seeing this project come to life and to witnessing the positive impact it will have on our legal system. A project of this magnitude requires the expertise and dedication of various stakeholders. I would like to take this opportunity to acknowledge the tireless efforts of the team from the Supreme Court Project cum Maintenance Circle of the CPWD, led by Mr. Purnesh Kumar, the Superintending Engineer cum Project Director. This team has worked diligently from preparing layout plans and conceptual drawings to finalizing estimates and ensuring that every aspect of the project is designed to meet the highest standards. I would also like to express our deepest appreciation to the Department of Justice and the Finance Department of the Union of India, as well as to the Ministry of Urban Affairs, for their unwavering support and cooperation. Their vision and foresight have helped create the foundation upon which this expansion rests, and their dedication ensures that the future of justice in our country is secure. Before I conclude, I would like to express my heartfelt appreciation to the dedicated officers of the Central Public Works Department, the CPWD. Their exceptional professionalism and unwavering commitment has been instrumental throughout the project of expansion for the Supreme Court of India. And I would like to acknowledge all of them and request each one of them, as I call out their names, to come onto the stage. I'd like to acknowledge Shri Purnesh Kumar, Project Director of the Supreme Court Circle. Purnesh, please come forth. Shri A.K. Grover, Senior Architect. Shri Manohar Lal, Executive Engineer, Civil. Shri Mayank Saxena, Executive Engineer, Civil. Shri Pritesh Shukla, Executive Engineer, Electrical. And Ms. Nidhi Gupta, Architect. Above all, I would like to recognize the tireless efforts to our one-man army in the Supreme Court, Mr. Mahesh Patankar, Registrar Building and Construction, who is always present for every challenge. Their tireless efforts in preparing of plans, presentations, project estimates, detailed EPC, tenders, and much more have ensured that every aspect has been carried out with the utmost precision. I thank you all and look forward to your continued cooperation. Namaskar, thank you very much. Thank you so much, sir, for this insightful and eloquent address. Your vision will undoubtedly guide this institution as it continues to serve people of India with wisdom, grit, and resilience. Supreme Court, like justice itself, is not static but ever evolving. It continues to change with the changing times. So, we have come up with a short video showcasing the state-of-the-art building of the Supreme Court of India.
With this, I would now like to request Honorable Chief Justice B.R. Gavai to kindly deliver the vote of thanks. Dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, members of the bar, registry. Pardon me for not taking individual names, because I have been allotted 5 minutes and I would like to stick to it. At the outset, I express my gratitude to the Honorable Chief Justice, Dr. Chandrachud, for giving me an opportunity to be on the dais on this very momentous occasion. Today's day will be written in a golden history of as a golden day in the history of the Supreme Court of India. I must at the outset state that today's day would not have been possible except for the dynamic, popular and visionary Chief Justice, Dr. Chandrachud. From the moment he took over as the Chief Justice of India, he conceptualized and saw to it that today the project begins. Though he has mentioned about the building committee, which under the able leadership of Justice Sanjiv Khanna, consisting of myself, Justice Vikramnath, Justice Suryakant, and Justice Nagaratna, had some role to play. But I will not like to steal the credit. The entire credit for today's event is only with the Chief Justice of India, and we had a very small and insignificant role to play in it. I really wonder, he's a person who's a storehouse of energy. How he gets energy to do all these things at the same time not compromising the judicial work. Exactly 4 Mondays prior to today, when we had all, along with Justice Oka, Justice Datta, Justice Bhuyan, and Justice Varade gone to Bombay to do the groundbreaking ceremony of the new Bombay High Court building, I had expressed a desire that the work which was conceptualized by the Honorable Chief Justice, the expansion building should also start prior to 10th of November 2024, and I am really grateful to the Chief Justice for accepting my request and making this possible. As I already said at Bombay, immediately after the Chief Justice took over, he has provided so many facilities for the judges, lawyers, litigants, and the staff of the Supreme Court. And in last 2 years, we have witnessed so many inaugural functions, and happy that today it culminates into such a grand event. It is always said that the judiciary does not have a power of sword or a power of purse, and it is without the support of the executive we could not have implemented this project. I express my gratitude to the Honorable Prime Minister of India, who on 28th of November 2024 on this very dais announced that the government has sanctioned 800 crores for this project. I am also grateful to all the concerned departments, the Urban Development Department, the Finance Department, the Law and Justice Department, for actively participating in the meetings and seeing to it that no red tapeism would come in the way of the expeditious implementation of the present project. I am happy to thank the Honorable Minister of Urban Development, Shri Khattarji, as well as the Honorable Minister of State for Law, Arvind Vimalji, who always supports us, for their unwavering support. The meticulousness and the precision with which the Honorable Chief Justice has planned today's event could be seen from 2 things. Firstly, we know that India is a secular country, and today we witnessed that 11 priests from different religions and different sects participating in today's event and making it truly secular. The another thing we notice is that normally when the plaques are prepared
only the names of the Chief Guests are there, but I am grateful to the Chief Justice for being meticulous and including the names of all the sitting judges on the plaque. I must also place on record the efforts of Shri Purnesh Kumar, Project Director, Shri A.K. Grover, Senior Architect, Shri Manohar Lal, Executive Engineer, Shri Mayank Saxena, Executive Engineer, Shri Pritish Shukla, Executive Engineer, and Ms. Nidhi Gupta, the architect, for their unwavering support for this project. The efforts of the Secretary General as well as Shri Patankar, who was in charge of this project, and all others associated with this project need a special mention. When I thank executive, I must also mention one thing, that when I and Justice Suryakant had become judges of the Supreme Court in 2019, the Supreme Court was having an acute shortage of accommodation. And therefore, Justice Gogoi had appointed a building committee consisting of myself and Justice Suryakant. And with the active support and assistance of the Honorable Solicitor General, Shri Tushar Mehta, we could acquire 7 additional houses for the Supreme Court judges and 8 houses for the members of the registry. When I praise the executive, I must also mention that to oblige someone, the government wanted to take one bungalow away from the Supreme Court judges' pools. But we strongly opposed it, and with the assistance of Shri Tushar Mehta, we were successful in not permitting any bungalow from the Supreme Court pool to be taken away by the government. I always consider the bar and bench to be the 2 wheels of the golden chariot of institution of justice. You span the one wheel and the efficacy of the other automatically comes to a standstill. And therefore, I must place on record my deep appreciation for the support of the Supreme Court Bar Association as well as SCORA, the Bar Association of India. As a matter of fact, the adjoining plot where the extension building consists could be possible only because of the litigation initiated by the SCB and SCORA. I express my gratefulness to all the office bearers. As I said in the beginning, I will not be taking any names, and pardon me for that. Our Constitution has recognized right to justice as a fundamental right. And right to justice includes speedy justice along with an affordable justice. I'm sure that the commencement of the building, the finalization of the plans will be complete within a short period. The building will actually start construction, and within a short time, as per the timeline announced by the Honorable Chief Justice of India, the building will be ready with all the ultra-modern facilities, and will prove a long way in providing speedy, efficient and affordable justice to the end consumer, that is the citizens of India. I once again congratulate the Honorable Chief Justice, congratulate all my colleagues and the members of the Bar Association and the Registry for this momentous day. Thank you very much. With this, we draw this beautiful ceremony to a close. Thank you all once again for joining us here today. I request all of you to kindly rise for the national anthem. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत।